Hello. So I'm looking for scalp, sell, or buy opportunities above or below 11. Once the 11 candle closes, I'll look for a scalp sell opportunity. If 11 low breaks, and look for scalp buy opportunities 11 high breaks. My target for a buy trade would be VWAP break, and my target for a sell break would be second half. I'll keep a stop loss of 11 high and 11 low. If buy triggers, नॉट ट्रेडिंग बैंक निफ्टी, नॉट ट्रेडिंग रिलायंस, मैं निफ्टी में स्कैल्प बाय अपॉर्चुनिटी और सेल अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ 11 क्लोज के बाद। अगर 11 क्लोज का लो टूटता है तो मैं स्टॉप लॉस रखूँगा 11 हाई और एग्ज़िट करूँगा सेकेंड हाफ में। अगर 11 क्लोज का हाई टूटता है तो मैं स्टॉप लॉस रखूँगा 11 का लो और एग्ज़िट करूँगा वीवैप ब्रेक पे। बैंक निफ्टी और रिलायंस में ट्रेड नहीं कर रहा। थैंक यू।